ओके आज हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने बात की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर। तो ये जो है दिस इज द सेकंड थ्योरी विच एक्चुअली अप्लाइड टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्रिस्टल थ्योरी वाज गिवन बाय बेथ एंड वन मैलिक and was first time applied to the coordination compounds in 1950. So no doubt valence bond theory has given us the concept that the metal ligand bond is purely covalent. That's the bond between the metal and ligand is dative bond, dative or coordinate bond. But according to this crystal field theory, the bond between the ligand and then the metal atom is purely ionic. That is, electrostatic attraction is between the metal ion and then a ligand. Now the postulates are the main points of this theory first. Postulates of this CFT. The very first postulate of this theory is that in the complexes, that is the bonding between the ligand and then the metal atom or metal ion is completely ionic. So this is the first postulate that according to this theory, the bonding is purely ionic. So first is the bond between metal ion or atom, between metal ion and ligand is purely ionic or electrostatic in nature. So this is the first postulate. Now the second postulate is, that means if it is purely ionic, that means since the ligands are negatively charged, so that because of these negatively charged ligands, negative or neutral charge, these ligands will behave as in a point charges. Now the second postulate is, in the complexes, the central metal atom is surrounded by the ligands in such a way that the repulsion between these ligands or these point charges or dipoles is minimum. So that second, the ligands are arranged in such a way around the central metal atom or ion. The ligands are arranged in such a way around the central metal atom to minimize the repulsion between the dipoles or point charges. Now these ligands behave as dipoles or point charges between the point charges and central metal ion. So this is the second postulate. The ligands are arranged in such a way around the central metal atom or ion to minimize the repulsion between the point charges and central metal ion. So this is second. Now the third postulate of this theory, the attractive force is actually between the ligands which are behaving as point charges. The attractive force actually between the ligands and the central metal atom or ion. So it is third. So that means the attractive force is actually between the ligands and then the central metal atom or ion in coordination compounds. So this is the third postulate. Now the fourth postulate of this theory is, since these ligands are approaching towards this central metal atom, that means there will be a repulsive force also. That means the repulsive force came into
existence between the lone pairs of the ligands and the d electrons of the atoms. So the forces are this repulsive force are actually the mean factor which actually explains the splitting of the d orbitals. So that means the next postulate of this theory is the repulsion the repulsive force also exists between the lone pairs of negative charge between the lone pairs of ligand and metal d electrons. The repulsive force also exists between the lone pairs of ligands and the metal d electrons of metal d electrons. Now the fifth postulate, that is regarding this splitting of the orbital. Since because of the repulsion between the metal d electrons and the lone pairs are the negative charge of the ligands, the d orbitals actually splits into two sets of orbitals. Since the d orbitals actually degenerate in energy, that means all the d orbitals is having same energy, but because of this repulsive force by the ligands, this degeneracy is removed and they are split into two sets of the two sets of orbitals. So that means the degeneracy, the degenerate d orbitals of central metal ion, the degenerate d orbitals of central metal ion are split into two sets of orbitals due to repulsive force of ligands. That means these d orbitals, if you have d orbital, that's actually split it into two sets of orbitals. One set in case of octahedral complex is known as T2G set, and while other is known as EG set, but we will come later on that. Before that, we will take next one important postulate. The two sets of orbitals obtained depends on the orientation in the space are the two sets of orbitals depending on the orientation in space are T2G, that is dxy, dyz, dzx, and EG sets or EG orbitals are dx square, dy dx square, y square, dz square. So the two sets of orbitals depending on the orientation in space are T2G, that is dxy, dyz, dzx, and EG sets are dx square, y square, dz square. Now, under the light of these postulates, now we will first take into consideration the crystal field splitting of octahedral complex, or crystal field splitting in octahedral complex. Since under the influence of the ligands,
the d metal orbital is having a degeneracy. That means all the orbitals of the d orbital have same energy, or they are at the same energy. But under the influence of these legions, the repulsive force removes the degeneracy of d orbitals. That is, the d orbital split into two set of orbitals having different energy. That is actually called crystal field splitting. So that is known as crystal field splitting. क्या है? As per the energy, if it is the order of energy, increasing order of the energy, what actually happens if you have a d orbital, say this is in a d orbital, under the influence, since all these orbitals are having same energy, but under the influence of this legend, the energy of these d orbitals increases due to the repulsive attraction, due to the repulsion of these electrons by the legends. So this is in presence of legend. These legends are usually a lone pair, or they have usually a lone pair or negative charge. So because of this, repel to these d electrons, because of this, the energy of the d orbital will be increased from this first state to the second state. So under this, but actually there is now a splitting, since there are two sets of the legends. One, those which are present on the equatorial position, and the other which are present on the axial positions. So under the influence of this repulsive interaction, this d orbital splits into two sets. One set that is already discussed is known as T2G set, which have three orbitals, that is dxy, dyz, dzx. The next set is EG set. So these three are known as T2G orbitals, whereas these two are known as EG orbitals. This is dx square y square dz square. So what actually happens, there is a change in the energy due to presence of the legends. The energy of this set, that is T2G set, they are usually present on the equatorial positions, that is, they are present in between the legends. So because of that, the energy of this set is decreases, while as these are present on head to head, that is axial position, on the axial positions, that with the head to head on legends. Because of that, the energy of this set, that is EG, increases. So because due to this difference in energy, this d orbital is split into two sets. The difference between the two is measured in crystal field splitting energy. That is a difference in the energy. The difference in the energy between the two sets of the orbitals is known as crystal field splitting energy. So that is known as crystal field splitting energy, CFSE. So CFSE, which is also represented by delta. If it is delta O, then it is crystal field splitting for an octahedral complexes. If it is delta T, then it's crystal field splitting energy for tetrahedral complexes. But hypothetically, the energy difference between the two is actually represented by with 10 dq. So the energy, total energy, is actually represented by 10 dq. But since this set of T2G set goes down in the energy, that means they are in a stable state, so that actually goes down by the energy with 4 dq, while as this EG set goes up in the energy by 6 dq.
So this actually the difference in the energy is actually called crystal field splitting energy. This actually happens in case of octahedral complex. So in case of octahedral complexes, now crystal field splitting in tetrahedral complexes. Now in case of tetrahedral complex, we have only 4 ligands, while as in case of octahedral there are 6. So now in this case, tetrahedral case, the metal atom is actually surrounded by only 4 ligands. So the splitting in this case is weaker. First question, because we have only 4 ligands, will repel to the d electrons. Second one is it is inverted. That means what actually happens in case of octahedral complex, that is completely inverted or reversed in case of tetrahedral complexes. The 3 d orbitals, that is the 2T2G set of orbitals, are close to the approaching ligands. That means they are in the direction of the ligands. Concept the T2G set of orbitals are in the direction of these ligands. So that is because of that they will feel a more repulsion from the ligands than the Eg electrons. So in this case the energy of T2G orbitals increase and becomes more than that of Eg orbitals. So the energy gap between the two sets of orbitals is no doubt same, that is 10 dq, but Eg set will now become down in the energy and T2G set will become up in the energy, because the ligands are approaching in the direction of T2G orbitals. So if we will see the splitting pattern in this case, in case of a tetrahedral complex, it is observed that delta T is less than that of delta O, that is octahedral complex ये कम है, is found for the same metal and ligand. If you have the same metal and ligand, the value of crystal field splitting is less in case of crystal field splitting in tetrahedral complex than splitting in octahedral complex, because first reason is we have only 4 ligands. Second important reason is that all the 4 these ligands are found in the direction of the T2G orbitals. So if we will consider this again for tetrahedral complexes, if it is energy order and we have 5 degenerate orbitals of degenerate d orbitals, but again in presence of ligands, there is increase in the energy of this, or in other words again the degeneracy of these 5 orbitals is removed or lost because of the repulsion felt from ligands. So the energy of this d, if it is first again and this is state second, so the state second is having higher energy than first, as seen in the octahedral complexes. But again these 5 d orbitals no doubt are still degenerate in energy, but they have higher energy than that of this initial state. So again this will split into 2 sets like that of octahedral complexes. One is Eg set, but I already told this is now inverted first in respect to the octahedral. So this is simply Eg set of orbitals, while this is T2G set of orbitals. T2G set of orbitals. Now again the energy, hypothetically the energy is actually equal to 10 dq, but now what actually we have seen is
these two orbitals, that is the EG set of orbitals, go down in the energy by 6 dq, while as these two EG set actually goes up in the energy by 4 dq. So the total difference in the energy is actually known as crystal field splitting energy. So this is actually the set, that is dx square y square, this is dz square, this dxy dyz dzx. So because of this d orbital, degenerate orbital, 5d orbitals are split into two set of these orbitals, but the splitting of this tetrahedral is weaker than that of splitting in octahedral. That means crystal field splitting is stronger in case of octahedral complex, while it's weaker for tetrahedral complex. O stands for octahedral, since the crystal field splitting energy is represented by this CFSE, or you can also write it with this delta T or delta O, whereas T stands for tetrahedral. Now we'll take the factors affecting for this splitting of d orbitals. Now factors affecting the splitting. First one is nature of the ligands. Nature of the ligands. Since we have two types of ligands, one is negatively charged ligands, second one is neutral ligands. So under the influence of the ligands, the central metal ion or the magnitude of the crystal field splitting energy depends on the nature of the ligand. Greater the ease with which the ligand approaches to the metal ion or metal atom, that means the atom, greater will be the crystal field splitting produced by it. So that means if we have stronger ligands, in other words, if we have stronger ligands, they will strongly split the d orbitals, or they will raise the energy of d orbitals more than those ligands which are weaker. So because of these stronger ligands, they will raise the energy and they will produce a strong splitting. Those ligands are known as strong field ligands, while as some ligands will not produce such a strong splitting, and they are known as weak ligands, and the splitting produced is simply weak splitting, or they are known. Now if we will divide the ligands into on the basis of their nature of the splitting of a d orbital, we have two types of ligands. One is strong field ligand, which will produce strong splitting. So those strong ligands are, we have highest is carbon monoxide, then we have Cn negative ion, followed by NO2 negative, then we have ethylene diamine is the next, we have NH3 eta, etc. These are the strong field ligands or strong ligands. These are strong field ligands or simply strong ligands, which actually pair the d electrons in a central metal atom, or which actually, what actually happens, because of this they will produce strong splitting. So because when they will produce strong splitting, therefore they will prefer to pair the electrons. That means they will prefer to pair electrons in d orbitals
in d orbitals either in bracket में लिख रहा हूँ either in T2G stage set or EG set. So in case of octahedral it will be T2G, but in case of tetrahedral it will be EG set. So because of this there will be the pairing of these electrons in presence of strong ligands. But we have the second category also. The borderline between the two is water. So the borderline between the two, those which have strong effect then water, they are known as strong ligands or strong field ligands. And those which have weak splitting ability then water, they are known as weak ligands. They are known as weak ligands or weak field ligands. Of them we have, first one is oxalate C2O4 divalent negative. Then we have hydroxide is stronger than water. Keep it in mind. Then we have fluorine. Next we have fluorine. We have NO3 negative. We have Cl. Then we have Br. Finally iodine, I negative. So Cl negative, Br negative. So this is the series of ligands arranged in order of increasing their splitting ability. So this is actually known as spectrochemical series. So this is known as spectrochemical series. Spectrochemical series of ligands is actually the ligands are arranged in order of their increasing splitting ability. That is known as spectrochemical series. Actually these ligands are arranged on the basis of their electronegativity and negative charge. Factors. Now the second factor is, since the splitting also depends on the nature of the metal atom, so the second factor is it also depends on the nature of the central metal atom. That means it also depends on the nature of the central metal atom and its oxidation state. So अब oxidation state क्या होगा इसमें, और उस पर भी ये डिपेंड करेगा. तो एक और है, it also, third one, it also depends on the nature of the nature of central metal atom and its oxidation. So यहाँ पर लिखना the nature, it also depends on the nature of the central metal atom and its oxidation state. It also depends on the number of ligands present in a coordination complex. So that means the complex having more number of ligands will be more strongly splitted, or in other words the d orbital will be splitted more strongly than the one having the less number of ligands. So based on these factors, now we will see what will be the effect of these factors on the distribution of electrons in both octahedral as well as in tetrahedral complexes. So distribution of electrons in tetra and octahedral complexes. Distribution of electrons in
tetrahedral and octahedral complexes. I already told it, it depends on the nature of the ligands. That means if you have strong ligand will strongly split the d orbitals because in the increase in the energy. So increase in the energy, but the strong ligands on the other hand will always prefer to pair the electrons, while as the weak ligand or the weak field ligand will prefer to keep the orbitals as half filled. So because of this effect of the ligands, there are two possibilities. Since the electron will prefer to be in a lowest state of energy, so when you have a strong ligand, that will prefer, that means they will pair electrons in the orbit, in the set of an orbitals having lower energy, whereas when you have a ligand which is weaker, that will prefer to have electrons in both T2G as well as in EG. If you have strong field ligands, you have weak field ligands. So that means if you have weak ligands and here you have strong ligands, in case of first we will consider only octahedral complex. Now distribution of electrons in octahedral complexes first in octahedral complexes. So first we will consider octahedral complex, then we will take these tetrahedral complexes. Now if we will start from the d orbitals having at least one electron, so then that means if we have a d n orbital, so first we will start if n is equal to 1, that means we have only one electron. But if we have only one electron, since this d orbital splits into, in case of octahedral, strong field ligands in case of octahedral, or we can simply write it delta splitting of d orbitals. This is also splitting of octahedral in weak field ligands. But if you have this d1 ion, central metal ion, what will actually happen at that time? You know, this d orbital in case of octahedral is split into T2G set and EG set. So that means if you have only one electron, the one electron will go to these three atomic orbitals. That is, the one electron will be present in this set of orbital, but we have a zero electron in this case, and the number of unpaired electrons will be equal to 1. So number of unpaired electrons. The number of unpaired electrons will be equal to 1. So this number of unpaired electrons, this is simply electronic configuration. This number of electrons, this ion. So if it is D1, but if we have strong ligands again, but if we have weak ligands, again what will happen? D1, if we have only one electron, again we will write the electronic configuration, number of unpaired electrons, So this is D1 ion. Now, so if it is D1 ion, now in case of this, what will happen in case of weak ligand? Again the electronic configuration, now we have T2G and EG set also in case of this weak field ligand. And what will happen, since we have only one electron, so the electron will also be here in this case. Again we have 0 here. But if we have D2 ion, that means we have T2G EG, but both the electrons will be present in case of this T2G, and we have 0 here. Number of unpaired electrons will be 2. But now if we have a weak ligand which will not prefer ligand pairing, that means T2G EG. So again we have 2 electrons in case of T2G,
0 in case of this. The number of unpaired electrons first case is 1, second case it is also 2, so it's same. Now if we have D3 ion, now let's try D3, T2G Eg. What actually happens, we have 3 atomic orbitals are here, that means we have all the 3 are present here. In case of this, we have all the 3 are present here, so the number of unpaired electrons now will increase by 1, so we have 3. So again in case of this weak field region, we have T2G3 Eg0, so T2G3 Eg0 and the number of unpaired is 3. सो इसमें ये रहेगा वी हैव वन. अगर हम इसके लिए एग्जांपल दोनों के लिए देखेंगे, वीक और लिगेंड कौन सा आयन इसमें होगा, पहले वाले में कौन सा होगा, टाइटेनियम ट्राइवेलेंट पॉजिटिव स्कैंडियम टाइटेनियम, हाँ ये वाला होगा, तो इसमें एक ही बचेगा. तो दूसरे के लिए अगर हम लिखेंगे तो उसके लिए होगा वैनीडियम, तो स्कैंडियम टाइटेनियम वैनीडियम, तो उसके लिए हम लिखेंगे वैनीडियम ट्राइवेलेंट पॉजिटिव. तो अगर 3 केस में होंगे तो क्रोमियम में हो सकता है, ये केस 3 पॉजिटिव वाला, दोनों के लिए एग्जांपल है. तो लेकिन अगर हम अब हम देखेंगे D4 आयन में, क्योंकि इसमें कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है. अब क्या होगा, यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहां पर वीक लिगेंड है. नाउ अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे, वी हैव T2G स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड विल प्रेफर पेयरिंग, तो दैट मीन्स इसमें कितने होंगे, वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स. और Eg में कितने होंगे, इन केस ऑफ Eg वी हैव 0. और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अब इसमें चूंकि 3 ऑर्बिटल्स है, 3 में 3 जाएगा, चौथा 1 में जाएगा, फिर इसमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो डिक्रीज हो जाएंगे. बट यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर वीक लिगेंड है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उसको क्या होगा, वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं हो सकती. इसमें 3 होंगे, सो इसमें 3 होंगे और इसमें 1 होगा. सो दैट मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखेंगे इसके लिए कितने होंगे, 4 होंगे. तो अगर इसकी एग्जांपल देखेंगे, मैग्नीज होगा इसके लिए, तो मैग्नीज के लिए जो चार्ज रहेगा 3+ रहेगा. तो दैट मीन्स यहाँ पर ये होगा. अगर हमारे पास D5 आयन होगा तो उस टाइम क्या होगा, T2G Eg. तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ फिर से पेयरिंग हो जाएंगी. यहाँ पर जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेगा वो 1 ही बचेगा. तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, 5 0 होगी. तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा. 3 ऑर्बिटल्स हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 में 1 ही होगा. तो यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ पर 3 होंगे और यहाँ पर अब 2 होंगे. सो उसके हिसाब से यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 होंगे. तो अगर हम एग्जांपल इसके लिए देखेंगे वो कौन सी होगी, वो होगी मैग्नीज आयरन ट्राइवेलेंट पॉजिटिव, ये इसके लिए एग्जांपल बनेगी. तो अगर मैग्नीज को एक और दे दोगे तो 2 डाइवेलेंट पॉजिटिव, वो भी इसमें एग्जांपल बन सकती है. हाँ, मैग्नीज डाइवेलेंट पॉजिटिव भी एग्जांपल हो सकती है. लेकिन अगर अब हमारे पास क्या होगा, D6 होगा, उसमें क्या होगी, T2G Eg. तो उसमें क्या होगा, T2G में कितने होंगे, अब 6 यहाँ पर होंगे, 0 यहाँ पर होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसमें 0 होगा. तो इसमें क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड है, इसमें कितने 3 + 5 6 है, इसमें 4 होंगे, और इसमें कितने होंगे 3. अब इसमें कितने हैं 4, 3 + 5 अब 6 है, और इसमें 2 होंगे. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे, 2 इसमें होंगे, 2 इसमें होंगे, 4 होंगे. सो अब ये डिक्रीज हो जाएगा. और इसके लिए अगर आप एग्जांपल देखोगे वो कोबाल्ट 3rd पॉजिटिव आयन होगा, ये इसके लिए एग्जांपल. अगर हमारे पास D7 होगा, फिर इसमें कितने होंगे, यहाँ से हाँ D7 का हम केस ले लेंगे, फिर उसी तरह सारे हैं. D7 का केस अगर हम ले लेंगे, D7 में क्या होंगे, इसमें जो होगा T2 में कितने होंगे, 6 होंगे. लेकिन एक जो बचेगा वो यहाँ आ जाएगा Eg में, और उसकी वजह से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा. लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे T2G Eg में, चूंकि वीक लिगेंड है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 हैं. तो इसमें पहले 2 होंगे, तो इसमें कितने होंगे, 5 होंगे. तो इसमें कितना है, और एक अनपेयर्ड होगा इसमें, और 2 इसमें होंगे, 3 होंगे. सो इसके लिए अगर हम देखेंगे कोबाल्ट के बाद होता है कौन सा, निकल होगा.
तो निकल में से चार्ज फिर से क्या हम रखेंगे, कोबाल्ट, इसमें कोबाल्ट 3 नहीं होगा, कोबाल्ट डाइवेलेंट पॉजिटिव होगा और ये भी आयरन डाइवेलेंट पॉजिटिव ही बनेगा, मैग्नीज डाइवेलेंट पॉजिटिव, आयरन डाइवेलेंट पॉजिटिव और कोबाल्ट डाइवेलेंट पॉजिटिव बना, चूंकि एक एक इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम निकल देखेंगे, निकल भी डाइवेलेंट पॉजिटिव में ही होगा। सो दैट मीन्स यहाँ पर अब फिर से बढ़ जाएंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर कम हो रहे हैं। सो अगर हम D8 वाला केस लेंगे, उसमें क्या होगा, यहाँ पर 6 होंगे, यहाँ पर 2 होंगे, तो उस टाइम यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 6 होंगे और यहाँ पर 2 होंगे, तो उस टाइम यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। निकल के बाद कौन सा आता है, निकल के बाद आता है कॉपर आता है, कॉपर डाइवेलेंट पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम D9 का केस लेंगे, उसमें क्या होंगे, यहाँ 6 होंगे और यहाँ 3 होंगे, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ क्या होगा, 6 यहाँ पर होंगे और इसमें 3 होंगे और एक ही यहाँ पर होगा और उसके लिए कॉपर डाइवेलेंट पॉजिटिव होगा। और D10 में तो हर एक पेयर्ड होगा, तो D10 ये जो है दिस एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्या है, जिसमें जितने ज़्यादा ये होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जैसे यहाँ पर ज़्यादा है 2 और इस वाले केस में 2 है, बट यहाँ पर क्या है 3, 4 और 5 है और यहाँ पर भी 5 है। दैट मीन्स दीज केसेस ये क्या होंगे, ये मोस्टली होंगे या तो फेरोमैग्नेटिक होंगे या फिर ये पैरामैग्नेटिक होंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया, इसमें वीबीटी थ्योरी में पैरा या पैरामैग्नेटिक होंगे, चूंकि हायर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। और इस वाले की जो कॉम्प्लेक्स है मोस्टली वो क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक ही होंगे, लेकिन इसमें चांस है कि इसमें फेरोमैग्नेटिक भी हो सकते हैं। और साथ ही ये भी है कि कलर, चूंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें ये क्या होता है, जहां पर ये डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, जहां पर जो T2G या सेट से इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे EG में, उन कंपाउंड्स में कलर होगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन पहले हम जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखें। अब टेट्राहेड्रल्स की बात, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हम बात करेंगे। अब इसमें क्या है, यू नो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लीजेंड्स होंगे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड यूजुअली प्रेफरिंग पियरिंग और वीक फील्ड यूजुअली प्रेफरिंग क्या करता है, वो प्रेफर नहीं करता है पियरिंग। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर पियरिंग एनर्जी है वो कम होती है। दैट मीन्स पियरिंग एनर्जी कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी नीडेड टू पियर द 2 electrons in a same orbital, that is known as pairing energy. So that means यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा T जो होगा पियरिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू पियरिंग एनर्जी PE, पियरिंग एनर्जी। लेकिन यहाँ रिवर्स होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पियरिंग एनर्जी जो होती है इस वाले केस में ये ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्प्लिटिंग एनर्जी। सो दैट इज वाई इसमें स्ट्रॉन्ग केस में क्या करता है, पियरिंग एनर्जी कम लगती है और यहाँ पर पियरिंग हो जाती है। जैसे ऑक्टाहेड्रल में पियरिंग हो जाती है पहले, फिर इलेक्ट्रॉन्स EG में जाते हैं। लेकिन यहाँ EG में चूंकि रिवर्स है, इन्वर्टेड स्प्लिटिंग यहाँ पर, सो दैट मीन्स यहाँ पर EG में पहले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे फिर T2G में जाएंगे। बट इसमें क्या है, पियरिंग एनर्जी कम है, पियरिंग हो जाएगी। से अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी सेंट्रल मेटल आयन में, D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी होगी, तो उस टाइम क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, वो इस वाले केस में जाएगा, तो वो इस वाले केस में होगा, लेकिन इसमें 0 होगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 होंगे। तो लेकिन अगर D2 आयन होगा तो उसमें क्या होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे, इसमें होंगे, तो इस वाले केस में क्या होगा, 0 होगा। तो फिर अगर हमारे पास क्या होगा, लेकिन उस टाइम हमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 होंगे। लेकिन अगर इस वाले केस में हम देखेंगे, या जहां पर वीक फील्ड लीजेंड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो से D1 के लिए यहाँ पर 1 ही होगा और यहाँ पर 0 होगा, और D2 के लिए इसमें 2 होंगे और यहाँ पर 0 होगा। तो वीक फील्ड है और सो इसमें 2 आ जाएंगे। लेकिन जब D3 आयन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लीजेंड है, यहाँ पर क्या होंगे, तीनों इसमें होंगे और इसमें 0 होगा, तो उसकी वजह से कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 होंगे। और लेकिन अगर हम इस वाले केस में वीक फील्ड लीजेंड है, इसमें कितने होंगे, 2 होंगे इसमें और 1 इसमें होगा। तो पहले वाले केस में 1 अनपेयर्ड है और इसमें दूसरे केस में कितने, 2 है। लेकिन इस वाले केस में कितने हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। सो दिस इज फॉर D3। लेकिन अगर हम D4 की बात करेंगे, चूंकि अगेन यहाँ पर क्या होगा, पेयरिंग होंगे, यहाँ पर 4 होंगे, चूंकि 4 ही आ सकते हैं, इसमें 0 होगा। तो अब इसमें कितने होंगे, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। सो इसमें कितने, 0 होंगे। लेकिन इस वाले केस में कहाँ 3 होंगे, 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर। तो अगर हम इस वाले केस में देखेंगे, इसमें चूंकि वीक फील्ड लीजेंड है, कौन सा है, D4 आयन है, तो अब इसमें कितने जाएंगे, 2 इसमें होंगे,
दो इसमें होंगे, दो इसमें होंगे, तो उसकी वजह से वी हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर हम D5 की बात करेंगे तो इसमें फिर से कितने होंगे, 4 ही इसमें रहेंगे, लेकिन इसमें 1 होगा और यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन D5 के लिए यहाँ क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, यहाँ पर क्या होगी, वी हैव 2 और वी हैव 3, तो उसकी वजह से यहाँ एक इसमें जा रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इसमें क्या होता है, इसमें 2 ही रहते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ 4 रहते हैं। दिस बिकॉज ऑफ लो पेयरिंग एनर्जी, देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब D6 के में क्या होगा, फिर से यहाँ पर अपने ही 4 रहेंगे और 4 में से 2 बच जाएंगे, वो यहाँ पर होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई अनपेयर्ड नहीं है। इसमें कितने अनपेयर्ड हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे फिर यहाँ पर। तो लेकिन अगर हम D6 के इस वाले में देखेंगे 3+2, तो उसमें क्या होंगे, इसमें फिर से कितने होंगे, इसमें फिर से अब इसमें अनपेयर्ड इक्वल है, इसमें कितने 3+2 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस वाले केस में, D5 केस में। बट D6 में अब क्या होगा, अब यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ पर अपने ही 3 रहेंगे और यहाँ पर अब 3 होंगे और एक पेयर्ड हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज, तो ये 4 पर आ जाएंगे। लेकिन अगर हम D7 केस हम यहाँ पर देखेंगे, इसमें फिर से अपने ही 4 होंगे, तो इसमें कितने होंगे, अब 3 होंगे। चूंकि इसमें 3 होंगे तो पहले इसमें कितने थे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और फिर अब कितने 3 में 3 होंगे, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन अगर हम इस वाले केस में D7 देखेंगे, तब उस वाले केस में क्या होगा, अब इसमें क्या होंगे, 3 में से 3 होंगे, लेकिन यहाँ पर एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इसमें होगा। सो वी हैव 4, इसमें कोई अनपेयर्ड नहीं होगा, लेकिन इसमें अनपेयर्ड होंगे 3, सो वी हैव 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब D8 वाला केस हम देखेंगे, इसमें कितने होंगे, 4 होंगे, सो इसमें भी 4 होंगे, एक डिक्रीज हो जाएगा। सो नाउ वी हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें। लेकिन D8 केस वाला अगर हम इसमें देखेंगे तो उसकी वजह से क्या है, इसमें अब 4 है, कोई नहीं आ सकता है, और सो EG4 होगा, और T2G इसमें कितने होंगे, 4 होंगे। अब इसमें अनपेयर्ड कितने होंगे, 2 होंगे। लेकिन अगर हम D9 वाला केस देखेंगे, हाँ इसमें कितने होंगे, 4 होंगे, तो इसमें अब 5 होंगे, और जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 1 ही होगा। अब अगर इसमें वीक फील्ड में देखेंगे, उसमें कितने होंगे, इसमें 4 ही आ सकते हैं। अब इसमें कितने, 5 होंगे, तो अब इसमें हाँ इसमें कितने बचेंगे, 1 ही अनपेयर्ड होगा। लेकिन अगर हम D10 का केस लेंगे, उसमें क्या होंगे, यहाँ पर 4 होंगे, यहाँ पर 6 होंगे, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उस टाइम। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे D10 की इसमें, तो उस टाइम क्या होंगे, 4 होंगे इसमें, और इसमें 6 होंगे, फिर यहाँ पर 0। सो दैट मीन्स D10 जो केस है वो सारे केसेस में सेम ही, उसमें जो प्रॉपर्टी वो हर एक में सेम ही रहेगा। सो आई थिंक दिस इज ये काफ़ी है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के लिए। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में रहता है। इसमें वो कैसे रहता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अगर हम कलर देखेंगे, वो क्या करता है, एक्चुअली इट एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ सर्टन वेवलेंथ विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब करता है। और वो विजिबल रीजन कौन सी रीजन है, इनमें वो रीजन है 400 to 700 नैनोमीटर्स। ये एक रीजन है, विजिबल रीजन है। सो विजिबल रीजन है, विजिबल रीजन, इस रीजन में ये एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो जो कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है वो इसी की बिना पर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बिना पर हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमारे पास अगर हम जो पहले मैंने एग्जांपल टाइटेनियम वाला कंपाउंड की एक वाली दी, तो उसमें क्या होता है H2O। और मैंने ये जो पहली एग्जांपल दी थी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, उसमें 3 पॉजिटिव वाला, तो उसमें क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। वो जो इलेक्ट्रॉन उसमें होता है वो किस में होता है, T2G में होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन। EG में क्या होता है, 0 इलेक्ट्रॉन होता है। और यहाँ पर क्या होता है, DD ट्रांजिशन हो जाती है। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ T2G में, ये कहाँ जाता है, ये EG में जाता है, और जिसकी वजह से ये किस रीजन में एब्जॉर्ब करता है, विजिबल रीजन में। और ये कलर जो इसका है ब्लू। So that is why the color in this coordination compounds और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैंने बताई, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे, जहां जैसे यहाँ पर 5 है, इसमें क्या होगा, अब ये फेरोमैग्नेटिक होगा। और जिसमें 4 है ये भी फेरोमैग्नेटिक, लेकिन उससे कम जिनमें होंगे 1, 2 या 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो पैरामैग्नेटिक हो सकते। बट जिनमें 0 है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे ये D10 वाला आयन है उसमें, या ये क्या होगा उस टाइम, या ये वाला जिसमें यहाँ भी 0 है, सो ये डायमैग्नेटिक होगा। सो आई थिंक दिस थ्योरी मोर सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स द magnetic properties of these complex plus the color in the coordination complex because of the DD transition. The electron